स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। शहीद काशीनाथ तलवार की सरकारी गौरव के साथ अंतिम विदाई। बीजापुर के करीब उतनाड़ गांव के काशीनाथ तलवार भारतीय सेना में पिछले 12 साल से 26वीं मद्रास रेजिमेंट से देश की सुरक्षा के लिए सरहदों पर तैनात थे। पिछले 6 महीनों से इन्हें सियाचिन के सरहद पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी कर्तव्य को निभाते हुए 16 फरवरी को सियाचिन के मौसम में तब्दीली आने से तापमान में 15 डिग्री से नीचे आने पर ठंड की शिद्दत ज्यादा होने पर भी बहादुर सिपाही देश के सरहदों की हिफाजत के लिए ठंड का डटकर मुकाबला करते हुए शहादत का जाम पिया। आज इस शहीद काशीनाथ को इसके आबाई गांव उतनाड़ में सरकारी आदर और सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कभी ठिठुरती हुई ठंडी में चलकर देख लेना, कभी तपती हुई गर्मी में जलकर देख लेना, कैसे होती है मुल्क के वफादारों से हिफाजत, कभी जरा सरहदों पे चलकर देख लेना। हो सर कर्नाटक में अभी शहीद जावेद के आंसू थम ही नहीं पाए कि कर्नाटक का एक और योद्धा काशीनाथ
काशीनाथ कल्लप्पा तलवार, जो शहर बीजापुर के उतनाड़ गांव का रहने वाला है, तो उसकी शहादत हुई। और ये जो है 26 मद्रास रेजिमेंट से था। तो शहीद जवान जो है सियाचिन में पिछले 6 महीने से सियाचिन में उनकी पोस्टिंग हुई थी, लेकिन 16 तारीख को अचानक जो है एक न्यूज़ आई कि काशीनाथ शहीद हुआ है। और उसी शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा गांव जो है उमड़ कर आया हुआ है। शहीद काशीनाथ की जो है मृत शरीर को जो है पूरे गांव में घुमाकर जो आखिरी दीदार के लिए गांव के स्कूल में रखा गया है। अब यहाँ के जो है सियासी, समाजी और प्रशासन के अधिकारी आ रहे हैं और उनको आखिरी सलाम पेश कर रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में इनको जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು. हाँ सर ಬ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ
Starting position. Present. Fire. Reload. Present. Fire. Reload. Present. Fire. Reload. Present. Up. ಸರು ಸರ್ ನನಗೆ ಏನರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ಅದಾರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಂ ರೀ ಹಾಂ ಏನ್ರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹಾಂ ನನಗೆ ಏನರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮಗ ರೀ ನಮ್ಮ 3 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತು ರೀ ಅವಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು ರೀ ನಮಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ 5 ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಅವರು ಕಳ್ಸಾನ ಅವಾಗ ಬತ್ರಿ ಅವಾಗ ಅಟೋತನ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅದು ಇದು ಆಯ್ತು ಕಸಿಯಿಂದ ಬೇವಿಜರ ಬಂದು ಕಸಿಯಿಂದ ಇದಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಂಬಂಧ ದವಾಖಾನೆ ತರ್ಲಾಕೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತೇವ್ರಿ ನಾವು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಏನೂ ಅಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ರಾಗದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನೋ ಸತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತಾನ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದು ಎದ್ರಾಗ ಬಿದ್ದಾರ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬರಪಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎದ್ರಾಗ ಬಿದ್ದಾರ ಕಾರ್ಗಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾರ ಇಲ್ಲರಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಕೇಳಿರಿ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕಾಶಿನಾಥ್ ತಳವಾರವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಮುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಸಿಗ್ತಿದೆಯೋ ಅಪರೂಪದ ಮುತ್ತು ಸಿಗ್ತಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಕಾಶಿನಾಥ್ ತಳವಾರರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಮುತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಈ ಜಾಗ ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ತಳವಾರಿಯವರು ಸಿಯಾಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ನಿಧನ ಹೊಂದಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗಿ ನಮಗೆ ದುಃಖಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅವನ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಇದೆ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿನೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂತು ಏನು ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ सौलभ्य ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. काशीनाथ तलवार बहुत अच्छा था, हमारे गांव के लिए किया अच्छा था। हमको वो मरा, हमको बहुत दुख है।
शहीद काशीनाथ तलवार को उतनाड़ गांव में नम आँखों से पूरा गांव एकजुट होकर आखिरी विदाई दी, सुपुर्द खाक किया गया। काशीनाथ 2006 में जो है मद्रास 26 रेजिमेंट के तहत आर्मी में सिलेक्शन हुआ। उसकी पहली पोस्टिंग सिकंदराबाद में हुई, उसके बाद आसाम गया। आसाम से 6 महीने पहले सियाचिन में उसकी पोस्टिंग हुई। सियाचिन में वो देश की सेवा कर रहा था। -डिग्री तापमान होने के सबब उसके शरीर में एक तकलीफ़ सी होने लगी, दम घुटने से उसकी शहादत हुई। और उसके पीछे उसकी बीवी और 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप, गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला काशीनाथ। 2 साल की एक लड़की और 4 साल की एक लड़की है। और उसकी बीवी से भी हमने बात करने की कोशिश की, तो वो भी जो है सरकार से गुहार लगा रही है। MA BA क्वालिफाइड है, ताकि उसे भी कोई सरकारी नौकरी मिल सके। काशीनाथ जो है गाँव का चहेता बच्चा था, चहेता जवान हो गया। उसके बाद उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो काशीनाथ को नम आँखों से पूरा गांव जो है श्रद्धांजलि दे रहा है। आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है। यहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बीजापुर उस्तुवारी मंत्री, जल संसाधन मंत्री श्री MB पाटिल का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जल संसाधन मंत्री, उस्तुवारी मंत्री MB पाटिल साहब ना आ सके। गांव वालों ने जो है इनकी अंतिम विदाई, काशीनाथ की अंतिम विदाई की। कैमरामैन तौफीक के साथ मैं खुर्शीद आलम, B न्यूज़ नेशन, उतनाड़। और खबरों के लिए देखते रहिए B न्यूज़ नेशन।